A ray of monochromatic light is incident on one refracting face of a prism of angle 75 degree. It passes through the prism and is incident on the other face at the critical angle. If the refractive index of the material of the prism is √2, the angle of incidence on the first face of the prism. Okay बच्चों, अपने पास क्या गिवन है, एक प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को कितना गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है, 75 डिग्री। एंड ऑल्सो अपन रिलेशन जानते हैं A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब आइए अपन क्या करते हैं, एक रे को जो है इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। एक रे हमारा इंसिडेंट कर रहा है, ओके एक रे को अपन इंसिडेंट करते हैं एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रे इंसिडेंट किया, यहाँ कुछ नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनेगा। रे क्या करेगा, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है बच्चों। बेंड हो गया, ये कुछ एंगल R1 ले लेते हैं अपन, यहाँ फिर से एक नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान समझिएगा, सेकेंड प्लेस पे क्या कहा है यहाँ पे कि रे जो है वो किस एंगल पे इंसिडेंट किया है, तो क्रिटिकल एंगल पे लिखा है। इट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड इंसिडेंट ऑन अदर फेस एट द क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स ये जो एंगल है R2 आपका, दैट इज R2 इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को अपन थीटा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का गिवन है √2, तो हमें पता है कि थीटा सी विच इज R2 इज साइन इनवर्स 1/μ। आप कहोगे क्रिटिकल एंगल का तो हमें फॉर्मूला पता है कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/u। थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ। म्यू इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, सो साइन इनवर्स 1/√2 इज नथिंग बट 45 डिग्री। So critical angle is 45 degree and critical angle is equals to R2, so we can say that R2 is 45 degree. Angle of prism is 75 degree. Can we find the value of R1? Yes, we can. Using the relation A equals to R1 plus R2, A is 75, R1 I have to calculate, and R2 is 45 degree. So from here R1 is 25 minus 45, 5 minus 5 will be 0, 7 minus 4 will be 30. So R1 is 30 degree, and what we have to calculate is angle of incidence on the first face of the prism. So we have to calculate I. Now applying Snell's law at this surface, let's say this surface I am naming it by AB. So applying Snell's law at face AB of the prism, okay, applying Snell's law at face AB of the prism, here refractive index is 1 into sine of angle of incidence is I is equals to mu refractive index √2 into sine of R1, and R1 is 30 degree. Sine I is equals to √2 into sine 30 is 1/2, so sine I is basically 1/√2. √2 into 1/2, we can write 2 as √2 into √2, so sine I is 1/√2. I will be 45 degree. Sine inverse 1/√2 is 45, so I will be 45 degree. Option number B is our correct answer. Option B is 45, so option B is our correct answer. I hope every step of the solution is clear to you.